Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is cytoplasm. So let's discuss it. Cytoplasm can be defined as it is the water containing part of the cell, or it can also be defined as it is the space or the area between cell membrane and the nuclear membrane. If you look at the diagram, here we have an animal cell, and here we have a plant cell. In the animal cell, just below the plasma membrane, we have a space right here, from the plasma membrane to the nuclear membrane. This whole space right here is called the cytoplasm. So it contains mostly water, therefore it is defined as the water containing part of the cell. Or if you look at the plant cell, so just below the plasma membrane and in between the plasma nuclear membrane and the plasma membrane, we have this space which contain many organelles, which we will discuss later. But this space which contain these organelles and these substances is called the cytoplasm. Right here we have cytoplasm in animal cell. So cytoplasm is actually composed of three parts, or you can say three components. The first component is soluble part. So soluble part is also called cytosol. It is made up of, or it is composed of 70% water. The second part is the insoluble part. Cytoplasm also contain waste and large proteins, which comes in the insoluble part. And the third component is the organelle. What is organelle? So organelle literally means little organ, just like the organ of our body, which has some specific function, like stomach digest food, and through lungs we breathe, and through eye we see different things, and through our ears we hear different sounds. In the same manner, inside the cell and inside the cytoplasm of the cell, there are some small organs, and these little or small organs are called organelles. These organelles are there are different organelles inside the cell, and these for example, we have endoplasmic reticulum, mitochondria. So just like the organs of our body, these organelles have some specific function, therefore they have been named as little organ. तो हम डिस्कस कर रहे थे साइटोप्लाज्म के बारे में. साइटोप्लाज्म हमारे साथ एक वाटर कंटेनिंग पार्ट ऑफ द सेल है, और ये हमारे साथ बेसिकली, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, और इसमें जो भी चीज़ें हैं, इन सारे चीज़ों को और इन सारे के सारे स्पेस को हम कलेक्टिवली कहते हैं साइटोप्लाज्म. अब हमारे साथ साइटोप्लाज्म जो है वो तीन कंपोनेंट से बना है. इसमें सॉल्युबल पार्ट है जो कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व है, इसको हम साइटोसोल भी कहते हैं, और ये 70% वाटर से बना है. इसमें दूसरा कंपोनेंट हमारे साथ इनसॉल्युबल पार्ट है. तो इसमें हमारे साथ वेस्ट मटेरियल्स और लार्ज प्रोटीन्स आते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होते, और जो कि सॉल्युबल नहीं होते, और वो इनसॉल्युबल पार्ट होता है. तो ये हमारे साथ इनसॉल्युबल कंपोनेंट में आते हैं. तीसरा हमारे साथ ऑर्गेनेल्स है. जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनेल्स का मतलब है लिटिल ऑर्गन. जिस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जिस तरह स्टमक फूड डाइजेस्ट करता है और लंग्स के ज़रिए हम सांस लेते हैं, उसी तरह सेल्स में कुछ लिटिल छोटे छोटे ऑर्गन्स, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, या ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गन की तरह. वो भी स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं. उन लिटिल ऑर्गन्स को हम कहते हैं ऑर्गेनल्स. और जिस तरह हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, उनका एक ख़ास काम होता है, एक ख़ास फंक्शन होता है, उसी तरह सेल्स में जितनी भी ऑर्गेनल्स है, हर एक ऑर्गेनल का अपना एक
स्पेसिफिक फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनल हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हर एक ऑर्गेनल्स का अपना एक ख़ास फंक्शन होगा। Thank you so much. If you find any hurdles in this lecture, feel free to ask.